हेलो एंड वेलकम टू पीजी रिएक्ट्स। तो आज के एपिसोड में हम रिएक्ट करने वाले हैं अब वीडियो ऑन मिस्टर अनंत पाई बाय सीके। उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओरिजिनल वीडियो को अपोर्ट देना मत भूलना एंड एंजॉय करो मेरी तरह, ठीक है? अरे मजा बहुत आ रहा है यार आजकल। अमर चित्र कथा, चलिए शुरू करते हैं। Imagine this. It's a warm day in Karol Bagh, Delhi. A man and his wife are searching for a shop. Somewhere on the way, they spot a TV store. She suggests that they go in. They've been looking to buy a TV for a while. He agrees and they enter. On one of the TVs inside, a quiz show comes on. I'm sorry, I haven't introduced the people we're talking about. Let's give you some backstory. This is the story of how Anant Pai, fondly known as Uncle Pai, got the idea for Amar Chitra Katha. Okay. Now, Uncle Pai had always been excited by quizzes. Trivia fascinated him. So, of course, seeing the quiz show, he stopped. The first question to the team was, who, according to Greek mythology, was the god of the oceans? Your options are A. Zeus, B. Hades, or C. Poseidon. Almost immediately the kid answered, Poseidon! Fairly easy answer if you know your Greek mythology. The next question, however, was, in Indian mythology, who is Ram's mother? Is it A. Kaushalya, B. Kunti, or C. Kaikai? This one took some time. Okay. The kids looked baffled. They muttered between themselves. The first team passed. The second team said Kunti. And the third said KK. All three teams fumbled on one of the easiest questions. The question was then passed on to the audience. Even I don't know. Of course, it was Kaushalya. Suddenly, a thought struck Uncle Pai. How did the children so confidently answer a question about Greek mythology? Why did they fumble so much with a simple question about Ram's mother? He knew something had to be done. You see, during this time, Uncle Pai had been working with a newspaper company, so he was familiar with the craft of publishing. Now, what started as a creeping thought soon became a full-fledged dream. First, Uncle Pai approached a publisher and suggested the idea. In fact, Mr. Pai himself wrote the script for the first ever Amar Chitra Katha, Krishna. It was during this time that Uncle Pai met Ram Vaikar. Ram Vaikar would illustrate the Krishna comic. He was also the artist who created Supandi. Okay. Initially, the onus fell on Mr. Pai to sell Amar Chitra Katha. He personally went from bookshop to bookshop requesting them to keep Amar Chitra Kathas and even set up display shelves for the books. He went to schools and conducted quizzes on Indian history and mythology. Soon, those quizzes became extremely popular and kids rushed to bookshops to buy the stories. As the popularity of Amar Chitra Katha started to soar, there was another opportunity presenting itself. Uncle Pai and his colleague Subbarao came up with the idea of a weekly comics magazine. This magazine would have stories and fun facts about animals. It was a magazine where learning would meet fun. Everything was decided but the name. It was at that very moment that Mr. Subbarao received a phone call. Not one to stop a brainstorming session, Subbarao picked up the phone and said he would give them a tinkle later. The moment the word was uttered, the room knew they were onto something. The magazine would be called Tinkle. Okay. To introduce Tinkle, Mr. Pai held storytelling competitions all over India. Tinkle was incredibly well received. After its very first day, the comic had sold out all 35,000 copies. A storytelling natural, Mr. Pai knew that somebody had to tell India's stories. From penning the very first Amar Chitra Katha to building an empire of Tinkle Toons, he accomplished what he set out to do. That day, Uncle Pai's life changed at the TV store. But that day also changed the way stories are told and read
across the country. A big hug to Uncle None of Pai. the stories that we tell on the Amar Chitra Katha channel would be possible without Uncle Pai. To read his complete story, click on the link above. Of course, remember to like and share this video and subscribe to Amar Chitra Katha, India's greatest storyteller. Indeed. Oof. बाप रे बाप. Okay. वो पोसाइडन वाला सीन मुझे पता था, ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड ऑफ ओशन पोसाइडन है, बट मुझे वो सेकंड, अरे यार भाई गजब बेइज्जती है भाई. ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीजों की तरफ अब से आगे. मुझे काफी कुछ पता है बट थोड़े बहुत आगे पीछे नाम वाम भूल जाते हैं हम, ठीक है, बट भूलने नहीं चाहिए, याद रखने चाहिए, ठीक है. मेरे को उस वक्त इतनी हंसी आ रही थी खुद के ऊपर, पता नहीं यार, मतलब क्या ही करे. ओके. एक्चुअली हमें पता है बातें, हमें स्टोरीज वगैरह पता रहती है, बट नाम वगैरह हम भूल जाते हैं, भूलने नहीं चाहिए. खुद को छुपा रहा हूँ भाई मैं, ठीक है. ओके. अनंत पाई के बारे में, श्री अनंत पाई के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था. लिटरली मैंने जब इस वीडियो के बारे में देखा, ये वीडियो मुझे रिकमेंड हुआ, मैंने सोचा कि अंकल पाई कोई लेखक वगैरह होंगे. मुझे ये भी नहीं पता था कि इनका अमर चित्र कथा के साथ कनेक्शन है, बट ये वीडियो ओपन होने के बाद आई वाज सरप्राइज कि ओके सो ही इज द गाय बिहाइंड ऑल दिस थिंग. एंड काफी सही हम थैंक्स कह सकते हैं उन्हें. लिटरली मैंने डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अमर चित्र कथा के वेबसाइट एंड शॉप्स के लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं. सागर किसे कहते हैं हम, अपना जो एक ओशन ऑफ कॉमिक बुक्स कह सकते हैं. इतने भी नहीं है बट बहुत सारे, ढेर सारे कॉमिक बुक्स अवेलेबल है मार्केट में. अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, उनकी खुद की वेबसाइट पे स्टोर है उनका, तुम वहां पर भी जा सकते हो. सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है दी हुई एकदम प्रॉपर. सो हाँ, जरूर परचेस करना, ये सब कुछ करियो, ठीक है, मैं भी करने वाला हूँ. सो हो सके तो जरूर ये कॉमिक बुक्स वगैरह परचेस करना. आई थिंक अमर कथा को इस 2020 के जमाने में आई थिंक बहुत सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि अनंत पाई का समय जो था वो थोड़ा पुराना था. तब मोबाइल वगैरह इतने नहीं थे बच्चों के पास, तो वो मजे लेते थे भाई, ठीक है, उन्हें मजा आता था पढ़ने में ये सब कुछ. बट आज मोबाइल के जमाने में जापानीज एनिमे वगैरह का ट्रेंड चल रहा है भाई, बच्चे वही देखते हैं. एंड आई थिंक कि पेरेंट्स को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है. पेरेंट्स को भी ऐसी चीजें परचेस करके देनी चाहिए बच्चों को, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम मोबाइल फोन, ठीक है. मोबाइल फोन से कुछ नहीं होता, ठीक है, बर्बादी होती है. मैं तो कहता हूँ कि बच्चों को 14-15 साल की उम्र तक उनके हाथ में मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, ठीक है. बर्बादी है भाई. आई एम वेरी लकी कि मतलब मैं 5th क्लास में था तब पहली बार मोबाइल आया था घर पे. आई एम 18 राइट नाउ, सो तुम अंदाजा लगा दो. सो हाँ, यही सारी बातें हैं. अंकल पाई के बारे में जानकर काफी अच्छा लगा मुझे कुछ पता नहीं था, जैसे कि मैंने पहले ही कहा. हम उनका कितना भी शुक्रिया करें वो कम है, ठीक है. उन्होंने जो कार्य किया है बहुत सही, एक प्रवाह जिसे कहते हैं हम, ठीक है, इंडियन कॉमिक्स का. आई डोंट नो इससे पहले कोई कॉमिक्स वगैरह थी क्या, अंकल पाई से पहले, अमर चित्र कथा से पहले. मे बी राज कॉमिक्स वगैरह का नाम मैंने सुना हुआ है, बट आई डोंट नो कि वो कितने पुराने हैं. हमें उसकी तरफ भी थोड़ा हो मुझे देखना पड़ेगा अगर राज कॉमिक्स के किसी कॉमिक्स का नरेशन वगैरह अवेलेबल है क्या इसी टाइप के वीडियोस में. आई होप होगा, देखना पड़ेगा, हम उस पर भी रिएक्ट करेंगे. एंड जल्द ही मैं शॉर्ट एनिमेटेड जो मूवीज होती है, शॉर्ट मूवीज ही कहते हैं, शॉर्ट फिल्म्स, ओके, शॉर्ट मूवीज नहीं कहते, शॉर्ट फिल्म्स कहते हैं, मैं उन पर भी रिएक्ट करूंगा. आई नो कैमरा थोड़ा ज्यादा शैटर हो रहा है. 7 साल नहीं, 11 साल, 2012 यानी कि 9 साल पुराना कैमरा है. बाप रे बाप. मैं काफी लकी हूँ कि मुझे एक कैमरा पड़ा हुआ मिला मेरे घर में ही. एंड मैंने लगा के देखा तो वो चालू था. एंड बट ये इट्स शैटर्स अ बिट, बट चलता है भाई, काम चला लेना पड़ता है. ओके. सो हाँ, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि तुम्हें अंकल पाई के बारे में, क्या अनंत पाई, मिस्टर अनंत पाई के बारे में तुम्हें क्या क्या पता था. एंड अगर नहीं पता था तो तुम्हें क्या क्या पता चला, मुझे कमेंट सेक्शन में, वाह मैं ये बोल क्यों नहीं पा रहा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अ बिग थैंक्स टू अंकल पाई, मिस्टर अनंत पाई. वाह, मैं नाम क्यों भूल जाता हूँ, मैं अनंत पाई ही ना मैं भाई, अगर ये नाम गलत होगा ना, मैं अंकल पाई इज इजी थिंग.
उनका नाम, नॉट द पर्सन। ओके, मैं काफी बार कुछ ऐसा बोल जाता हूँ फिर उसके अलग अलग अर्थ निकल जाते हैं यार। सो ये a big thanks, much love to Mr. Uncle Pai, and yeah, that's it for this episode। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही देना अगर यहाँ तक आए हो तो। एंड ये जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड ये मच लव टू मिस्टर अंकल पाई।